Hello students, welcome or welcome back to my channel. How are you all? I hope that you all are preparing well and for the upcoming exams you all are preparing, and I am here with the most requested videos, that is important chapters as an important topics, and today we will be discussing the important chapters of JIGL. But before starting the video, it's a disclaimer that I want to put out that by this video by no means I'm saying leaving the least important topics or leaving the less important topics and only doing important topics. No, ऐसा कोई भी मोटिव, ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है. बस एक ही मोटिव है कि आपको प्रायोरिटी पता चल जाए, आपको ये पता चल जाए कि आपको कौन से चैप्टर्स पहले करने चाहिए और कौन से चैप्टर्स बाद में, लेकिन ऑल एंड ऑल आपको सारे चैप्टर्स ही करने हैं, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. ये नहीं सोचना कि जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाले वही करके आपने चले जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं. आपने सारा कुछ करके जाना है बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, राइट? सो स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस, please feel free to check the content I create and subscribe to my channel if you have not done it yet. I have divided these categories into three categories, starting with the first, the most important chapters. First thing is most important chapters, right? Starting with chapter number 1, chapter number 2, chapter number 3, chapter number 6, chapter number 8, chapter number 9, chapter number 10, chapter number 16, and lastly 17th, right? Starting with the first chapter, which is sources of law. We know that this chapter specifically deals with the law theories, the legal theories. So make sure that you're going through all those theories, and the best way to remember them is, because बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि हमें हमें कैसे याद रखें, हमसे याद ही नहीं रहते. तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप इनके शॉर्ट नोट्स बना लो, और थ्योरी का मतलब क्या है, द मीनिंग, द एक्सप्लेनेशन, दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग. देन ऑफ कोर्स उसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड देन उसकी क्रिटिसिज्म क्या है. व्हेन यू विल पुट ऑल दिस टुगेदर एट वन प्लेस, इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू प्रिपेयर इट एज वेल एज टू रिवाइज फ्रॉम इट. क्योंकि एक ना एक थ्योरी तो क्वेश्चन पेपर में आती ही आती है. दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस chapter to have a good hold of all the legal theory. Moving to the second chapter, no need to tell how important is Constitution of India from exam point of view. It is also one of the most important and one of the most lengthiest chapters. So from Constitution of India, you should know all the fundamental rights. Firstly, all the doctrines rather. You should understand all the doctrines. Secondly, all the fundamental rights. And thirdly, the writs. These three topics are very very important. Rather I'll say पूरा chapter ही बहुत important है constitution का, क्योंकि इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं. बड़े सारे topics हैं जिसमें से questions बन सकते हैं. तो again I'm saying don't leave the topic, but मेरे according जो most important topics हैं या most tricky topics हैं वो ये तीन ही हैं. right? Doctrines, जहाँ आपको doctrines अच्छे से पता होनी चाहिए. Secondly, all the fundamental rights के जो article numbers हैं, उनकी जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. एंड थर्डली द रिट्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो कॉन्स्टिट्यूशन तो अपने आप में ही बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट? मूविंग टू द थर्ड चैप्टर, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बिकॉज उसमें से ना क्वेश्चंस बहुत सारे फॉर्मुलेट हो जाते हैं, एंड बच्चे ये सोचते हैं कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, बट इट्स नॉट लाइक दैट. रादर इंटरप्रिटेशन को अगर आप समझ जाओगे तो आप अपने वर्ड्स में भी उसे कोट कर सकते हो. इट बी वेरी गुड एंड वेरी नाइस. सो इंटरप्रिटेशन में जितने भी टॉपिक्स आते हैं उन्हें कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करना, इट वुड बी वेरी वेरी easier for you as compared to other topics, as compared to other these chapters, right? तो इंटरप्रिटेशन को अगर एक बार आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू आंसर इट, राइट? मूविंग टू द सिक्स्थ
chapter, my favorite, which is Law of Dots. लॉ ऑफ डॉट्स का चैप्टर काफ़ी छोटा है और अगर आप उसे अगेन समझ जाओगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ऑल्सो आपने जो इसकी हेडिंग्स है, काफ़ी जगह पे जो हेडिंग्स आएंगी वो एज इट इज़ कोट करने की कोशिश करनी। एक्सप्लेनेशन आप अपने मन से दे सकते हो, बट प्रोवाइडेड कि वो एक्सप्लेनेशन करेक्ट हो। बहुत अच्छा रहेगा अगर उसमें कीवर्ड्स होंगे, देन तो इट्स वेरी वेरी गुड। तो लॉ ऑफ डॉट्स का चैप्टर बहुत छोटा है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, आप एक्चुअली में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मूविंग टू द थ्री बैक टू बैक chapters which are very very important from exam point of view, which is chapter number 8, which is CPC, it's the Civil Procedure Code. Chapter number 9, which is IPC, Indian Penal Code, and chapter number 10, CRPC, which is Criminal Procedure Code. All these three chapters are very very important. You have to understand the topics and you have to understand it in depth, because case studies are also being asked from these chapters. So make sure you understand them conceptually so that you can answer any type of question being asked from especially this 8th, ninth, and 10th chapter. Moving to the last two chapters, RTI and IT Act. These both chapters are also very small but very important, because every attempt questions come from these two chapters, so they are very fun. Yet you can learn and revise in less time and score more. That is what we call ABC analysis. So these two chapters are really really scoring and very very short, so that you can prepare them easily. So these are the most important chapters, as in you should start from these chapters. Once you're done with these chapters, you will feel that confidence in you कि हाँ हम तो कर ही सकते हैं, बाकी के बचे हुए भी हम कर सकते हैं। तो इसीलिए जब आप पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेते हो, उसके बाद आपके जो टॉपिक्स है वो भी थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड ऑल्सो that you grab that confidence that once I can do this, I can do those as well. The second category I would suggest is the less important one, as an important है भी और इतने भी ज़्यादा important नहीं है. Right, in this we have chapter number 4, chapter number 5, chapter number 7, and chapter number 11. Starting with chapter number 4, the General Clauses Act. Again, very simple chapter. Understand the clauses, understand the sections that are given towards the end of the chapter. They are very very scoring, very very easy to understand, and very very scoring as well. So General Clauses Act could actually help you gain good marks in the exams, right? Chapter number 5 is administrative law. Now administrative law is a little technical chapter, but make sure if you can learn it, understand it, then you can definitely clear it easily. Then comes chapter number 7, the Limitation Act. Again, this chapter is also a very small chapter. The table that is given in between of Limitation Act, don't learn that table. That is not to be, read. There are certain important topics of Limitation Act, as in doctrine of sufficient cause, then what time is to be excluded from the Limitation Act, what is acknowledgement, and the last topic is also very very important, that relates to the time of the limitation period. Exactly, the last topic is also very very important. And the last less important chapter is chapter number 11, which is Indian Evidence Act. Again, the same thing. The Indian Evidence Act also deals with the same problem. It's a little lengthy chapter because it has a lot of illustrations, जिसकी वजह से बच्चे थोड़ा डर जाते हैं. प्लस इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं एज एन एडमिशन एंड कन्फेशंस, रेलेवेंसी कैसे इस्टेब्लिश करनी है, वो अगर आप एक बार समझ गए तो इट विल बी वेरी वेरी easier for you to actually attempt this chapter also. So these are the less important chapters in terms of priority. Once you're done with most important chapter, hop to the less important chapters, ताकि आपका काफ़ी सारा सिलेबस हो सके. और इसके बाद आ जाते हैं least important chapters, as in the chapters which are very lengthy, and as compared to the length, not much is asked from them, which is chapter number 12, 13, 14, and 15, right?
which relates to, of course, special codes. It's a very small chapter. So even like my point of view is when you will reach here, you will understand what are the tribunals, what are the special codes, so you can easily remember them and learn them. It will not be a bigger deal for you. Chapter number 13, which is arbitration and conciliation, and all of us know it's a very, very huge chapter, and very less marks, weightage is asked from this chapter. So that is why इतना important नहीं मैं इसे मानूंगी, लेकिन हाँ, आपको बेसिक पता होना चाहिए आर्बिट्रेशन क्या है, कंसिलिएशन क्या है. इनफैक्ट जब आप पढ़ने जाओगे तो अगर आपने आर्बिट्रेशन कर ली तो कंसिलिएशन भी मोर और लेस सेम ही है, राइट. देन चैप्टर नंबर 14, इंडियन स्टैम्प एक्ट, अगेन एक बहुत ही लेंथी चैप्टर, बट जिसमें से ज़्यादा चीज़ें पूछी नहीं जाती. एंड लास्टली द रजिस्ट्रेशन act, right? These are the least important chapters, as in these have to be done at the last toward the end without after completing the above mentioned chapters, right? तो ये सारे chapters consider करने आपके लिए बहुत ज़रूरी है, but only on the basis of priority, right? I hope कि आपको समझ आ गया होगा कि most important, less important and least important सिर्फ एक priority basis के लिए है कि पहले ये chapters करो, फिर ये करो, फिर ये करो, but कोशिश करो कि सारे ही chapters जो है वो आप कर सको. It will be very, very beneficial for you. So I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, and do follow me on my Instagram as well. My handle is CS Jasprit. I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, keep the preparations on. Bye bye.